Okay, so in the starting we will be starting with the topologies, all the topologies, star, mesh, tree and ring. तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे पीसीज के लिए 4 पीसी लेंगे एंड विल कनेक्ट 4 पीसीज फॉर स्विच विल टेक 2960 क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पोर्ट्स होते हैं. यू कैन सी द पोर्ट्स, यू कैन सी 24 पोर्ट्स है. नाइस. So we'll connect, for connecting we'll use this automatic cable detector whatever it is. इससे हमें कौन सा क्रॉस थ्रू या फिर क्रॉस ओवर या फिर स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करना है वो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा. नाउ विल हैव टू असाइन द आईपीज. आई विल असाइन रैंडम आईपीज 10.10.1 से स्टार्ट करेगा पीसी 0 के लिए एंड वो सबनेट मास्क भी आ जाएगा उसके साथ ही. सेम फॉर पीसी. ठीक है, सीक्वेंस में आते हैं. सेम फॉर पीसी 3 एंड पीसी 1 4 असाइन कर दिए. एंड इफ़ वी ऐड अ पैकेज, हैव अ लुक ओवर हियर. यहाँ पे आपको एक दिखेगा आईसीएमपी पैकेट ट्रांसफ़र होते हुए. और प्रैक्टिकल में करना है सिमुलेशन. थोड़ा सा स्लो होता है पर ठीक है. सो ये हो गया. यहाँ पे लाइक वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ तुम्हें आता है कुछ. तो दिस एंड विल मेक अ रिंग. रिंग में हमें चाहिए मल्टीपल स्विचेस. आई क्रिएट अ कॉपी ऑफ द सेम स्विच. 3 स्विच का बना सकते हैं. रिंग के लिए 4 इज़ बेटर. कनेक्ट ऑटोमेटिक इधर क्रॉस ओवर यूज़ होता है बट अगर एग्जाम के टाइम पता नहीं तो ऑटोमेटिक इज़ बेटर. द डॉटेड लाइन इंडिकेट्स इट्स अ ओल्ड लाइन, लाइक सिंगल लाइन इंडिकेट्स इट्स अ स्ट्रेट थ्रू कनेक्शन. वो कनेक्ट हो गया. अभी करने के लिए पीसी चाहिए. मैं यहाँ पे एक पीसी अटैच कर रहा हूँ. एग्जाम में कितने भी कर सकते हो प्रैक्टिकल्स में, नो इशू. विल यूज़ ऑटोमेटिक हियर, लाइक यहाँ पे भी कर सकते हैं बट यहाँ पे वही सीन, यू हैव टू सेलेक्ट कौन से पोर्ट में डालना है. इट्स बेटर यूज़. तो हाँ, कनेक्शंस तो हो गए. सेम गोज हियर. यहाँ पे फर्स्ट टाइप पे 10 दिया था, यहाँ पे भी 10 दे सकता हूँ बट इट्स बेटर वी यूज़ डिफरेंट आईपी फॉर डिफरेंट नेटवर्क्स. डिलीट पैकेट्स अभी नहीं दिखाने. यहाँ पे कर दिया है या 1. कॉपी दिस, इसको कॉपी करके पेस्ट हियर, चेंजिंग द लास्ट बिट्स. this changing the last bit to 3, pressing enter. changing last bit, pressing enter. तो या यू कैन सी कि ये सब कनेक्ट हो गए. ओके, यहाँ पे कुछ तो इशू है आई गेस. ओके, इन प्रोग्रेस, इन रियल टाइम सक्सेसफुल. यहाँ से यहाँ पे सक्सेसफुल, सक्सेसफुल. यहाँ से यहाँ पे सक्सेसफुल. डिलीट दिस. यहाँ से यहाँ पे सक्सेसफुल एंड. तो या यू कैन सी ये भी सक्सेसफुल हो गया है. विल क्रिएट अ मैश. इसी में मैश बना सकते हैं एक्चुअली. कॉपी बना दूँ. ओके, कुछ तो ब्लेंडर हो गया है आई गेस. नहीं, यहीं पे बनेगा फॉर वॉट एवर रीज़न. ओके, हाँ उठा सकते हैं इसको यहाँ पे. फॉर मैश वी जस्ट हैव टू कनेक्ट सर. तो ये मैश हो गया. एंड आई पीज़ आई गेस सेम ही हो गया. इट डजेंट मैटर क्योंकि ये दोनों अलग नेटवर्क्स है. दिस इज़ इंडिपेंडेंट नेटवर्क, दिस इज़ इंडिपेंडेंट नेटवर्क. तो सेम आई पीज़ असाइन कर सकते हैं. एक बार पैकेट ट्रांसफर करके देखते हैं. सक्सेसफुल, सक्सेसफुल. ओके, फेल्ड. इंटरेस्टिंग. ओके ओके, अभी कनेक्ट. हाँ, आई गॉट इट. फर्स्ट टाइम जब कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता, अभी सेम अगर हम यहाँ से कुछ भेजें यहाँ पे इट विल शो बात ले रहे बट या इफ यू सेंड हियर टू हियर नो फंक्शनल पोर्ट ऑफ कोर्स यहाँ नहीं जाएगा. यहाँ पे यहाँ बट कनेक्टेड है सारे. नहीं होगा. ठीक है, जैसे ही एक बार हो जाएगा सक्सेसफुल आई गेस सबके लिए काम कर रहा है अभी. हाँ, तो ऐसे बन जाएगा. बस इनको आई पी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड ही रहते हैं. इनको आई पी देने की ज़रूरत नहीं होती राउटर्स को. तो मैश हो गया. एंड वी गो फॉर ट्री. दिस नहीं, नया बना देते हैं फॉर ट्री. सो या तो ट्री का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक रूट नोड होता है एंड इनको लीव्स इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते, थोड़ा इजी रखते हैं. अभी इनके यहाँ पे पीसी कनेक्ट कर सकते हैं 3.
हर एक स्विच के ऊपर 3 पीसी, सो इट विल लुक लाइक अ ट्री. तो या सिंपल switch to the other two switches and we connect these switches to the PCs. ये सबको IP देना पड़ेगा. The most boring task is to give IP. बाकी सब इंटरेस्टिंग है इसमें. हो जा. Yeah. So starting from here, we'll start with as I said, we are, but in the same network, we can't use the same IP for everyone. Copy this and paste over here by changing the last bit to 2 and pressing enter. Press enter. Same here, 4 and press enter. And this is 5, enter, and this is 6. या तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं होता. सिग्नल यहाँ से एक पैकेट यहाँ से यहाँ पे वो मैं सिमुलेशन में एक बार दिखा दूंगा. यहाँ से जब यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे हो रहा है इज पैकेट गोज टू दिस राउटर दिस स्विच एंड देन टू दिस स्विच then to this switch and then whatever and PC10 sends acknowledgement back to the PC13 that it have received the packet. that बस इतना ही होता है. सो फिर अभी क्या बचा है, रिंग मैश हो इतना ही है. या इसको सेव अभी के लिए नहीं करते, कर लेते हैं ऑल इन वन. ओके तो या मैस रिंग स्टार ट्री, हाँ ये 4 ही है. ओके नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज़ डेमोन्स्ट्रेट ARP एंड पिंग था आई गेस. तो इसी में से किसी पे कर सकते हैं वो चीज़. नहीं ARP के लिए वी नीड अ राउटर और एंड या दिस वन saved bro. 6 PC in one switch is the same. इसी पे 2 और PC का experiment is done. कनेक्शन टाइप ऑटोमेटिक पे 10 से लेके 4 तक दिया था. सो 4 तक यहाँ पे 1 मिनट. ओके सो कमिंग बैक टू दिस 6 PC वन स्विच, हमने यहाँ तक इसको हम दे देंगे 5 कंट्रोल में. ये 10 की है, विल गिव इट 5. इसको हम दे देंगे 6. यहाँ तो बस ये डेमोन्स्ट्रेट करना है related to will send packet from PC1 to PC15. We can hide all the packets at CMP and ARP. एक्चुअली यहाँ पे ARP टेबल नो ARP टेबल भी दिखा सकते हैं बट वो राउटर वाले में करते हैं. अभी के लिए सिर्फ ICMP सेंड करेंगे. या विल सेंड या वॉट एवर हैपन्स ऑन द स्विचेस इट कम्स अंडर नेटवर्क लेयर. एंड जो भी राउटर ओके बफर फुल क्योंकि कंप्लीट हो, मैंने सारे इवेंट्स हटा दिया था, बस एक इवेंट रखा था इसलिए हुआ था. ठीक है. एंड नेक्स्ट क्या था, या ARP राउटर. इट्स बेटर ऑन राउटर्स अकॉर्डिंग टू मी. यहाँ पे चलेगा बेटर राउटर इज दिस आई गेस. तो इसमें भी 4 है. विच वॉज द राउटर आई गेस ये था. चेक फॉर द सीरियल पोर्ट्स. आई डोंट नो कौन सा राउटर. ओके ये था शायद, या PT राउटर सॉरी. या इसमें सीरियल पोर्ट्स होते हैं. एल्स वी कैन डिलीट. This too, delete this also. Yeah, so we'll use router. So router, what does router do is for example copy banana. We'll create a copy of this. We'll drag and a copy of this I guess. Yeah, better copy of, drag it here. तो एक्चुअली इसको थोड़ा ऊपर रखना चाहिए था, वो ठीक है, इसको नीचे ड्रैग कर लेंगे. एंड राउटर ओवर हियर दिस टू. ओके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार वापस टू हियर. सो इसका IP क्या है एक्चुअली वो चेक करना पड़ेगा क्योंकि सेम IP के नेटवर्क्स. ओके तो या 11.11.11 इज बेटर. कॉपी द फर्स्ट ट्री and replace it with everyone else in the network. And don't forget to press enter जब चेंज करते हो. मोस्टली वो हो जाता है खुद से.
but it's better you सबके लिए परफॉर्म करना पड़ेगा. यहाँ एज आई यूजुअली यूज़ दिस DHCP लैब्स में भी, बट प्रैक्टिकल में अगर टीचर ने पूछ लिया तो थोड़ा BT हो सकता है रिगार्डिंग दिस. यूज़ किया लैब्स में तो हमने तुम्हें ये सिखाया था, दैट बुलशिट. टीचर के पास रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए, बस टू नो द बेसिक्स एटलीस्ट. उसके बाद DHCP वगैरह नहीं, कोई नहीं पता क्या होता है DHCP में एक्चुअली. बस ये पता है डायनेमिक नेटवर्क. Okay, connecting this, it's mostly connects through, I don't know, but straight through cable I guess. Okay, तो यहाँ पे लाल दिख रहा है, that means the connection is not stable and you can check it by sending this PC to this PC, जो तुम्हें फील्ड दिखाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये सेटअप नहीं किया. राउटर के लिए हमें IP देना पड़ेगा. सो ये इसका एक कलेक्टिव IP, लाइक वॉट एवर द फर्स्ट 3 डॉट्स जो कंटेन करते हैं वो 11 है. तो we'll have to we have to add a gateway which will be 11.11.11 और 100 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑलरेडी दे चुका. हमें सेम ये कौन सा कनेक्शन पे हुआ है. हाँ, नाउ वी हैव टू लुक फॉर द ओके फास्ट इंटरनेट. ओके, पोर्ट 0, फास्ट इंटरनेट 0 to 0. विल पुट हियर वॉट एवर द गेटवे वी हैव पुट ऑन फॉर दिस नेटवर्क वी हैव पुट. तो यह सबके लिए करना पड़ेगा, सारे पीसीज के लिए. तो अभी कौन से पीसी दिस फॉर दिस टू एंड ऑल्सो फॉर ये पीसी के लिए क्या था आई गेस. या इसको बंद करते हैं. सबके लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे. गेटवेज लाइक के जिससे राउटर कनेक्ट होता है. मेरे नो प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत आइडिया है. तो यहाँ इसमें भी हमको वी हैव पुट दिस पोर्ट स्टेटस ऑन. तो या यू कैन सी जो रेड मार्क था वो भी ऑन हो गया. ये अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक कुछ पैकेट गया नहीं है. जब पैकेट चला जाएगा तो ये भी ग्रीन हो जाएगा. इसके लिए भी हमें चेंज करना पड़ेगा द ओनली, क्योंकि यहाँ पे बढ़ा सकते हैं एक्चुअली गेटवे 10.10.10.100 कॉपी करेंगे. विल पुट फॉर एवरीवन एल्स टू. ये थोड़ा सा गंदा लगता है मेरे को, बाकी कुछ नहीं है. बाकी बहुत सही है सब चैप्टर, ये सब्जेक्ट में मैनुअली IP डालना इज़ लाइक टू अटेंशन. याद रखो कि किसको क्या दिया था. या ये सब होने के बाद में यहाँ पे किससे कनेक्ट हुआ है ये FA1 of 0. तो फास्ट इंटरनेट 1/0 विल पुट दिस एंड विल स्टेट द पोर्ट स्टेटस. सो यू कैन सी के लाइक यहाँ पे हो गया एक्चुअली प्रॉपर. सो विल सेंड अ पैकेट फ्रॉम दिस. इनिशियली वो फेल दिखाएगा बट होपफुल इसके बाद वो दिखा दे. ओके, आई डोंट नो फेल क्यों आ रहा है. ये सक्सेसफुल आता है. नो, ये भी फेल आ रहा है. कुछ तो है इशू यहाँ पे. इसको 10 दिया, इसको भी 10 दिया. आई विल चेक हियर ऑल्सो 10 100. ओके, आई गेस को बस टाइम लगता है लोड होने में. या इट्स सक्सेसफुल नाउ. तो दोनों टू लोड द स्टेटस. ये क्यों फेल हो रहा है. एक बार हो जा. ओके, सक्सेसफुल हो गया भाई. इसको एक बार कनेक्ट लॉस्ट होगा इफ़ यू डू पिंग थिंग. अभी मैं इन सब के लिए पिंग नहीं करूँगा. इट विल टेक अ लॉट टाइम. इफ़ आई सेंड 2 or 3 पैकेजेस आई विल गो टू हियर. यहाँ पे कितने पैकेजेस है. इसी को 2-3 पैकेज भेज सकते हैं. वन विल गेट इट. विल सी. फास्ट कर देते हैं पूरा. जा रहा है पैकेट. सो हमने क्यों किया, इसका रीज़न भी ये था. वी हैव टू नाउ सी द ERP टेबल. तो अगर हम ये PC पे जाके होता है वी हैव टू यूज़ दिस मैग्नीफाइंग ग्लास टू इंस्पेक्ट बफर फुल. एक क्लोज इट. अरे नहीं यार, पूरा PC थोड़ी बंद करना है. हाँ ओके. तो अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो आई कैन सी राउटर का एड्रेस दिखता है. फिर मैं जो भेजा हूँ ये तो 11 है. मैं यहाँ पे 10 को भेजा हूँ तो यहाँ पे गेटवे दिखेगा हमको ये राउटर का एड्रेस कौन सा राउटर. एंड इफ़ आई सेंड द पैकेजेस या. सो या
यू सी हाउ मेनी राउटर्स आर यूज्ड ड्यूरिंग द कनेक्शन. अगर मैं यहाँ पे एक और राउटर लगाता हूँ तो 2 राउटर के एड्रेसेस आएंगे. बस यही चीज़ है. थिंक जो मैं पैकेट सेंड करता हूँ एक्चुअली पिंग है, बट आई विल शो इन द टर्मिनल. टर्मिनल में कैसे दिखता है पे जाऊँ. एक्चुअली मेरे को इसका एक देखने दो. इस वक्त से हटा के आई चेक इसका IP 11.11.1. या I will send to, if I say ping 11.11.11, we can see request timeout. I don't know. वही रियल टाइम में जाते हैं. या तो 4 पैकेट्स गए, 0 लॉस्ट. अगर मैं ऐसे किसी भी भेजता इससे पहले मैंने नहीं भेजा है, जैसे कि इस पे आई विल पिंग 0.0.3. तो इनिशियल पैकेट लॉस्ट होगा, उसके बाद में सारे पैकेट हो जाएंगे. द फर्स्ट पैकेट इज लॉस्ट. तो या बस यही चीज़ है, बाकी तो ईजी है. ओके, तो हमने ARP भी देख लिया, पिंग भी देख लिया, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ नेक्स्ट. इसको सेव कर लेते हैं. नेक्स्ट इज ARP FTP. ओके, OSCP FTP फर्स्ट. OSPF काफ़ी बड़ा है. एक्चुअली बड़ा नहीं है, थोड़ा सा लाइक कमांड ज़्यादा रन करने हैं उसमें, और कुछ नहीं. FTP के लिए वी नीड अ राउटर, वी नीड अ स्विच. बेटर टू यूज़ राउटर आई गेस. पता नहीं, सुना था मैंने कहीं पे. बट इफ़ यू यूज़ राउटर तो ठीक है. PC बस सिंपल है. इसको कनेक्ट कर लो सबको, इसको इससे एंड इसको इससे. आफ्टर दैट इसको IP दे दो वॉट एवर यू लाइक. फॉर मी इट्स ऑलवेज 10.10.10.1. इसका रखेगा सेम 10.10.10.100. We'll do the same for server also. We'll give it IP of 11.11.11.1 and gateway of 11.11. Okay, 1.11.100. Let me check. हाँ ठीक है, आवाज़ होगा ठीक है. या तो कर दिया इसका गेटवे एंड IP दोनों के लिए. नाउ बस इसके लिए फर्स्ट वी हैव टू चेक कि कौन किससे कनेक्टेड है. वो दिखता है जब इस पर होल्ड करोगे आप. तो इस पर जाना है, कॉन्फ़िगर पे जाना है, गीगाबाइट 0001. एंड यहाँ पे इसका गेटवे जो डाला था तो यहाँ पे IP बन जाता है. बस ये डिफरेंस है. इसका पोर्ट ऑन करेंगे तो दिख रहा है कि कनेक्टेड स्टेटस है. सेम हियर इसके लिए 00 से कनेक्टेड है. विल गो टू 000. विल राइट 11.11.11.100. ओके ऑन. एंड इसका स्टेटस दिख रहा है ऑन है. तो फॉर जस्ट चेकिंग, एक्चुअली में ये है नहीं एक्सपेरिमेंट का, बट फेल आएगा लगेगा कॉन्फ़िगर होने में. ओके अभी हो गया, अभी सक्सेसफुल आएगा. अभी भी फेल आ रहा है ऑफ कोर्स. या पहला था तो या इट्स सक्सेसफुल नाउ. तो या एक्चुअल में ये नहीं करना है, ये हमने बस इसको करने के लिए सक्सेसफुल एक बार आ जाए उसके बाद में और एक पिंग करके देख लेते हैं हमारे सर्वर को 11.11.11.1 आई गेस. या प्लान. ओके सो FTP फॉर FTP. ओके एक्चुअली हमें इसको भी सेटअप करना पड़ेगा. एक डिफ़ॉल्ट होता है बट इट्स बेटर यू यूज़ योर ओन. बट आई क्रिएट वन नेम्ड मार्शियल एंड पासवर्ड विल बी मार्स. Give the permission to read, write, delete, rename and list. So in the experiment it is said that you have to put one file and delete one file. To put a file and get a file, not delete a file. तो we'll get and put a file. और बाकी सब ठीक है. या टर्मिनल खुलाइए. तो विल जस्ट टाइप FTP. तो तुम्हें लाइक एक्चुअली आप FTP लिखने कुछ आएगा नहीं. इट विल से टारगेट वट एवर द एड्रेस IP एड्रेस ऑफ द सर्वर. सो उसके लिए मांगेगा यूज़र नेम विच इज़ पासवर्ड इज मार्स. पासवर्ड दिखेगा नहीं, जस्ट हैव टू टाइप एंड एंटर. तो दिखा रहा है लॉग इन, दिखा रहा है लॉग. here we have to first we can check whatever files are there by dir. तो सारे फाइल्स दिख रहे हैं. now we have to create a close this, open text, hello my name is. so I'll save it, control S. फाइल का नाम है martian.txt. we'll go back to the terminal command prompt and we'll put. okay zoom नहीं होता, sorry guys. कंट्रोल प्लस नहीं काम करता है. तो ये मैंने लिखा है put with the file name martian.txt. yeah so writing the file transfer in progress and transfer. okay तो ये तो हमने फाइल ट्रांसफ़र कर दी. now if we do dir you can see now we have to download one file. तो ये डाउनलोड कर लेते हैं. थोड़ा अच्छा फाइल दिख रहा है .tar.
we'll copy this name, we'll type cat file name, we'll paste the file name. So it's saying reading file this dot tar from server IP, क्योंकि फाइल साइज थोड़ा बड़ा है, अप्रॉक्सीमेटली कितना, अगर डिवाइड भी करें तो 28 MB आई गेस, आई डोंट नो एक्जैक्टली, 10⁻²MB, पता नहीं के बी है MB है, वो भी नहीं पता। यहाँ सो हो गया, इट टुक 8 सेकेंड टोटल फाइल एट द स्पीड ऑफ दिस पर सेकेंड। तो ये बस यही एफ टी पी इतना ईजी है। यहाँ सो अभी OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, या समथिंग लाइक दैट। सो विल परफॉर्म OSPF, वी नीड 3 राउटर्स, ये राउटर नहीं था, ये वाला राउटर था। सो वी यूज़ PT राउटर, 3 PT राउटर्स, and switch, actually this one करते हैं, and 2 PCs। मैं डालने के लिए तो मेरे को कंट्रोल आ रहा है डालने में, आई वांट कनेक्ट एनी जितने रिक्वायर्ड उतनी करेंगे यहाँ, क्योंकि बहुत सारे राउटर्स हैं। विल कनेक्ट ऑल दिस, या यू कैन सी द चेंज इन व्हाटएवर कलर और डिज़ाइन। इसके लिए ये यूज़ सी, या नहीं सीरियल सी, क्योंकि इधर टाइमर भी है, इट विल शो द लाइक क्लॉक दिख रहा है, आई डोंट 10.10.10.100। हियर आई रिकमेंड यू गाइस के नेटवर्क, क्योंकि थोड़ा क्या होने वाला आगे। सो विल यूज़ लेबलिंग, विल टाइप द IP फॉर ईयर, यहाँ पे ये तो नहीं डालेंगे, 11 करेंगे इसको। क्या एंड इट्स डन। अभी ये जो कनेक्शन है विल गिव इट 12 100, will give 13 and 100, here it will be 14.100, yeah। So we'll set up the router now। अभी एक set to fast internet 00, so we'll go to configure fast 00, यहाँ पे कौन सा कनेक्टेड है, this one 10.100, DNS अपने हो जाता है, पोर्ट फॉरवर्डिंग ऑन, सेम फॉर दिस कॉन्फ़िगर, और कौन से से कनेक्टेड हो देखे नहीं, ये वाला, एंड इसका 3, इसका 2, ओके इसको भी दे देते थे, इसका 3 था, तो सीरियल पोर्ट 3 12.12.12.100 ऑन द पोर्ट स्टेटस। सेम कुछ यार, यहाँ पे एक इसके लिए देख लेते कनेक्शन, इसके लिए सीरियल 2 है, सीरियल नहीं, फास्ट इंटरनेट 0 ही रहेगा मोस्टली, या 0, तो फास्ट इंटरनेट 0, विल गिव इट 11 पॉइंट, पोर्ट स्टेटस ऑन, एंड सेम फॉर सीरियल 2, या 12.12.100, पोर्ट स्टेटस ऑन, एंड फॉर दिस 13 थर्ड से, तो थर्ड पे विल पुट 13.13.13.100। सो फॉर दिस राउटर, ये सीरियल 2 पे कनेक्टेड है 14 से, सो सीरियल 2 विल बी हैविंग 100, पोर्ट स्टेटस ऑन। या अब तक तो काफ़ी बोरिंग पार्ट था, IPs देना, DNS वगैरह, गेटवेज वगैरह। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, ये दोनों साइड 13 और 15 से अभी देखते हैं किससे कनेक्टेड है। सो फ्रॉम दिस राउटर इट्स कनेक्टेड टू सीरियल 2, एंड फ्रॉम 13 इट्स कनेक्टेड टू सीरियल 3। 14, we'll give it 14.14.14.100, port status on, we'll give it 13.13.13.100 with port status, yeah। तो अगर अभी if you try to send a packet, it will show fail, of course, okay। इसको IP देने भूल गया, वाह, सबको IP दी, इसको नहीं दी, या ऑफ कोर्स इसको IP देनी 11.1,
and इसका gateway will be 11.11.11.100. yeah, from here to here नहीं जाएगा of course. कितनी बार भी ट्राई कर लो, it doesn't matter कि तुम कितना कर रहे हो, क्योंकि हमें यहाँ पे टू राउटर अपने आप हो जाता है. वी अटेम्प्ट 2-3 टाइम्स. अभी सब ग्रीन है बट फिर भी नहीं जाएगा. यू कैन चेक यहाँ से यहाँ तक इट्स सक्सेसफुल, यहाँ से यहाँ तक इट्स सक्सेसफुल, यहाँ से यहाँ पे इट्स सक्सेसफुल, यहाँ से यहाँ तक इट विल फेल. इट फेल्स एंड इट फेल्स. द रीज़न दिस हैपेंस, क्योंकि हमें अभी पड़ेगा फ्रॉम द CLI. So we'll open this router, we'll open the CLI, we'll press something whatever. It's into configure if mode. We have to exit the if mode. Okay, we're exiting if mode and we have to go to router mode. So we'll type router OSPF 1. 1 gives the ID, like whatever process ID it is given, like 1 देगा उसको. It's F means open shortest path first, then goes into router mode. And here to set up network, तो हमारा first network था 10. We'll put 000 after that. It doesn't matter, कुछ भी लिखो. We have to put the complement of the subnet. तो हमारा subnet था 255.000. So here we have to put 0.255.255, and आगे we have to put area. Yeah, so 10th one is done. We have to config for then 14. So ये राउटर से 3 IPs कनेक्टेड है. सो ये तीनों के लिए हो गया. नाउ वी मूव टू सेकंड राउटर. इसके CLI पे जाएंगे, सेम थिंग, एंटर. विल पुट राउटर OSPF 1. विल राइट नेट. तो यहाँ पे कनेक्ट होता है 11.0.0.0 एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबनेट 255.255.2 into area 0. Same for 13 and 12. Yeah, it's loading also, loading to full whatever 14. We have to configure this. Here we have only 2 IPs. We'll exit this. Okay, exit, not exist, exit, whatever I wrote. We have to go to router, then network. It is 14.0.0. complement of subnet. Then yeah, same for 15. That's done. If you open this, here it's saying 13 is fully loaded, this connection. Here it's saying for 15. Here it says nothing for as of now. It takes time to load the connections. If it's sending the packet, it says it's failed. We'll check 2-3 times. Yeah, it's successful now. Simulate that by sending the packet. 2 packets are selected. We'll send it. So you can see the shortest path is sending the packets to this PC and taking an acknowledgement back. So yeah, OSPF is also. We'll move on to coding part. Yeah, so we'll move on to the coding questions came in the practical. Cyclic redundancy check. Yeah, so here's the code. I'll run it. So which is 110.101.1011 and the generator is 10011. So if we the checksum of this 1110 and if we append this checksum to our data sequence and the given sequence is acceptable or not, it says no error detected, data is valid. So what is actually happening is this in the generator code given goes to the CRC checksum in stored in to the function CRC generator. So this is the function. This is the function CRC generator. We append the data with the zeros. So here we get 5 digit of which is length of generator, which is 5 minus 1. So we append it with 4 zeros and we store it into an array. This is that function list into data, list of data. We store it into data only. After that we store
by using list generator. So here's the main function, the whatever XOR function we use. Here it is. We check, like if the data is 1, it goes to the for condition for j in range of generator. Here it is the data I plus j is 1. No, data I plus j is equal to 1 if data of j else 0. So here it states that if data I plus j is not equal to generator, the data I to 1, else it will be equal to 0. The same we do in the division operation. If it's same, yeah, if it's same we move it to 0. Yeah, if it is not same we move it to 1. The same XOR operation is. So yeah, we append the checksum, we store it into CRC checksum and return it. So after it get returned, and after that we create a variable result which will add data sequence plus checksum and then return. So that here data will be equal to data sequence plus the checksum, the CRC checksum generated 1110. So here we check if this is accepted or not. So the data, yeah, same, we do the same data, this whatever zeros, number of zeros we add, and CRC checksum equal to CRC generator. So we create a whatever appended zeros we contain, and we check if the CRC checksum is equal to 0 into the, it will show no errors and data is valid. If it shows it, if it is not equal to this, yeah, whatever, it will show an error that data is corrupted. That's it for the CRC. And the second code was TCP software. We have to create two files. One is server.py and client.py. This can't be run on Colab because it. So we'll run this command. First we will run server.py. We have to run this in their dedicated terminal, because like normal terminal we won't be able to run client.py. Yeah, so we have to kill this, kill all these server.py in its dedicated terminal. We'll run it and it's saying listening to this host. And same goes for client.py. We'll run it in dedicated terminal and we'll get a prompt saying hello client. It will say hello server. Yeah, so now we know the both are code working and server and client are connected like from the same ports. Yeah, that's it for this. I'll provide both the codes, code of in the description on my GitHub account, so you can download and use it from there. So yeah, those were all the questions came in the practical today, and I hope you find it helpful. And like, share, subscribe.